धुलाई शुरू हो जाएगा, उसका काम है। चलो, so we start with our new chapter called light. Light. How many of you are studying light right now, or all have studied in your school? Okay, only Hannah and Phoenix. आपको पढ़ा रहा है, इसको पढ़ा रहा है, अपने हाथ उठा चलाइए. Okay, so we are in which grade right now? Grade 8. बड़ा सुंदर चीज है यहाँ से फिजिक्स का. ग्रेड 8 में आप लाइट पढ़ेंगे. उसके बाद वो बचपन में वो खेलते हैं ना किट 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 9 में नहीं पढ़ेंगे. फिर जाके ग्रेड 10 में, और 10 के बाद यू कैन सिलेक्ट सब्जेक्ट्स. फिर किट 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 फिर जाके ग्रेड 12 में पढ़ेंगे. राइट? सो इट्स लाइक T20 World Cup cricket comes once in 2 years. So if you do good now, your next chance to do good in grade 10, after that grade 12. By that time you are 17.5-year-old murga or murgi, whatever you are. इतना दिन चला जाएगा. ठीक है? So here it will form the basic. The initial 25% of the chapter is just a ditto copy in grade 10. In fact, if you take grade 10 physics Lakshmi Singh and you first compare it, word to word will be match. Which means what? अगर रात को जागना है तो अभी सोना है ना? A stitch in time saves 9. So if you do good here, you reinforce it here. And in between there will be a gap year. 9 you will not study anything about it. So things are little bit challenging. And this whole branch in classical physics is studied under the topic called optics. Light हम बोलते हैं, घर का नाम है ब्रेड. अच्छे बहुत सैंडविच नाम थोड़ा अच्छा लगता है ना. So this studied under optics. Clear? ठीक है? So if anybody tells you, children, did you study optics? Okay, force में आपने किस branch of physics को पढ़ा? Mechanics. Force, friction, pressure, these are all under mechanics. अभी आप optics में चले गए, फिर हम current में जाएंगे, फिर जब sound पढ़ेंगे तब किस में जाएंगे? Acoustics में जाएंगे. ये optics में आ गए हम. ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं लाइट. पहले we're going to study something which are having some terminology. I'll tell you something which is not in your syllabus, but you should know so that things become interesting. So some of the basic things we all know is that light. What is light? Light is a form of energy. ये सब किताबी बातें. Form of energy. Light makes us see things and all. Light is a form of energy and we see things due to light. ये सब बाद में आएंगे, पहले कहानी समझते हैं. One of the source of light for us is what? The sun, which comes out every day, is irrespective of sunny or cloudy. On a cloudy day also the sun has come out, however the cloud is between you and the sun, so you can see the sun. The sun rises every day. So one of the source of light is sun. तो पहले sunlight को देखते हैं. ठीक है ना? ये जो sun आप देखते हो, आपको सन से क्या दिखाई दे रहा है? सनलाइट दिखाई दे रहा है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अब मजा, अभी आपके आंख दिमाग खुल जाएगा अभी. दिस इज आवर सूर्य देवता और नोन एज सन. राइट? द सन इज गिविंग यू समथिंग विच इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम. व्हाइट लाइट नहीं, दिस इज स्पेक्ट्रम. आधा मत बोलो. एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. The sun is basically releasing lot of waves to you. ठीक है? और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? The EMS. अब 10 में भी, अब ये सब 8 में नहीं है. But if you compare yourself as 8 with ICSC, IGCSE and all, you should not be some idiot. No, you should also know things, general knowledge. So the sun is giving something which is known as the electromagnetic spectrum. Right? जैसे when you go to a decathlon, at your age, first you will be always fascinated only by the sports goods item. But there are many things like behavioral lifestyle, अच्छे घड़ियां हैं, health monitoring, there are exercise things, but that don't attract us so much at your age. At your age, what will attract us are badminton rackets, ये cricket bat, ball, ये सब. तो ये electromagnetic spectrum हम सब नहीं देखते हैं. तो इस spectrum को याद करने के लिए एक छोटा सा poem ले लेंगे, और poem हमारा कुछ ऐसा रहेगा. गाड़ी XUV, इसको याद रखिएगा लाइफ लॉन्ग. इन माई रेंज,
देखो एग्जाम में मत लिख के आ जाना, दिस आर आवर टेक्निक ऑफ लर्निंग. गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज. दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर द स्पेक्ट्रम. अब स्पेक्ट्रम कैसे याद रखेंगे, आइए. गाड़ी स्टार्ट होता है जी से, तो सन हमें देती है गामा रेज. गामा रेज. एक्स से आता है एक्स रेज. यू से आता है यूवी यानी कि अल्ट्रा, या बहुत लोग स्टाइलिश लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट. तो अल्ट्रा वायलेट, ब्रिटिश सेड अल्ट्रा वायलेट. ओके. एंड देन आई से आता है इंफ्रारेड. ठीक है. एम से आता है माइक्रोवेव. ठीक है. और आर से आता है रेडियो वेव्स. सो इन द सन you are getting so many things are coming when the sun is falling on your sun rays are falling on your body. The interesting part is I don't have a violet out here. यहां से शुरू होता है, यहां जहां है ना इंफ्रारेड और इसके बीच में. सो violet I am writing with this. यहां पे हमें दिखने को मिलता है something which is known as विबजियोर. और ये जो छोटू सा पोर्शन है ना, ये पोर्शन को भाई साहब थारा जो आंख है ना, ये थारा आंख रोज सुबह इसी को देखता है. और ए का नाम है लाइट. और यह लाइट का कलर होता है व्हाइट. व्हाइट लाइट. यू आर ओनली सीइंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन स्पेक्ट्रम. And we will be studying only this part. समझ में आ रहा है? Sun is giving you gamma rays. Gamma rays highly cancerous, huge penetrative power. They can penetrate even concrete. X-rays highly cancerous, not good for health. Ultraviolet ये तो है ही cancerous. ठीक है. तो इसको कौन रोक रहा है? The ozone layer is stopping it. So if you have a hole on the ozone layer, ultraviolet घुस के आ गया और मार दिया आपको. ठीक है. Like if you go in Australia and all, the rule in Australia is that you are supposed to use very high grade sunscreen. The sunscreen that we get in our lotions, sunscreen lotion आता है ना इंडिया में, so you'll have something written called SPF, sun protection film. SPF we use in India is 30 plus, whereas in Australia you are supposed to use 60 plus. That's why you'll see Australian bowlers जो white होके आता है ना, that's very necessary. We laugh at it. Like when I stayed, I have stayed like 6 months. When I used to stay, white patch हो जाएगा, and the government always advertises that you should be with full clothes. टी शर्ट नहीं, फुल टी शर्ट पहनिए, प्रोटेक्टेड रहिए, वेयर अ हैट, बिकॉज स्किन कैंसर बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, ल्यूकेमिया. देन आता है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड इज एनीथिंग व्हिच इज एमिटेड बाय एनी हॉट ऑब्जेक्ट्स. यू कैन सेंस इट. ये रूम को पूरा अंधेरा करके अगर मैं गरम कढ़ाई कोने में रख दूं ना, आप सेंस कर पाते हो. लाइक समटाइम्स व्हेन यू आर वॉकिंग in the summer days and you walk past a house which has got a AC unit outside, don't you feel warm when you're walking beside it? That warm is because it is radiating infrared light. Infrared is also used for communication. All the remote controls are giving you infrared radiation. And every infrared, how can you check whether your remote is working or not? If your remote is working, no, some remotes may not have red light, like this remote doesn't have. Switch on your camera mobile and then put that remote, you will be able to see the red light. Like this particular remote, if I now start it, the television will go up. ये आपको red light कुछ नहीं देगा. आप ऑनलाइन क्लास में थ्रू कैमरा देख रहे हो, यहां से मारूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें अगर मोबाइल कैमरा ऑन कर लोगे आपको दिखेगा. ठीक है. इंफ्रारेड इज यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल कम्युनिकेशन. माइक्रोवेव, दिस इज द बैंड. फ्रॉम हियर स्टार्ट्स ऑल योर सेलुलर कम्युनिकेशन. सेलुलर एज वेल एज जो आप कुकिंग करते हो ना, वो भी यहां से. एवरीथिंग, आप अपना टाटा स्काई बोल लो, एयरटेल बोल लो, सब यहीं से हो रहा है. ऑल एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर. एंड रेडियो वेव्स आल्सो फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है. ये बेसिक चीज हमें जानना चाहिए. तो सन डज नॉट गिव यू ओनली सनलाइट. एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज ओनली द विजिबल पोर्शन. दिस इज द विजिबल पोर्शन. ये विजिबल पोर्शन है, visible portion, and the visible portion we call as light, and it is white light. So whenever you see white light, anything which is emitting white light, say the electric bulb or anything, it actually has 7 colors inside it. These are the 7 colors of the rainbow, Vibgyor. Okay. However, you get monochrome lights also, like sodium monochrome light. It will be emitting only one color from it only. ऐसा भी रहता है. तो white light अगर आपने कहीं भी देखा, तो white light में ये सब में 7 कलर मौजूद है हमारा. थोड़ा समझ में आया?
तो इसकी ये बुक आपका कवर नहीं करता है, पर मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जानना चाहिए दैट द एंटायर थिंग्स ऑल दैट वी आर डूइंग कम्युनिकेशन, डिश टीवी, टाटा स्काई, ये सेलुलर, एयरटेल, जियो, ये सब कुछ इसी में ही हो रहा है, आर ऑल दीज आर हैपनिंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड. So in that we see only this part. So our chapter is only about this part, which is light. ठीक है, आइए. So some of the things that we need to know is light is a form of energy. Light एक form का energy है. कैसे? जैसे सोलर लाइट होता है, लाइट से आपके सोलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन ऑर्डर टू सी थिंग्स वी ऑल्सो नीड लाइट. एंड समथिंग ऑल्सो यू लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और इसको हम बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. दिस इज ऑल्सो स्टडीड एज नोन एज, वेरी गुड, this is known as rectilinear propagation of light. Propagation of light means light travels in straight line. How do you prove it? Shadow is one of the best example. If there is a light source, stand in front of the light source, the shadow will be formed exactly behind in a straight line. But though at your level not discussed, when you go to higher grades, like you go to grade 12, you will be studying light does not travel in a straight line. Light bends. So NCERT writes it very nicely that in grade 8 children you studied, it is written in grade 12 textbook. In grade 8 you studied light travels in a straight line. But as you have grown up from grade 8 to grade 12, light also grew up and now it's slightly become disobedient and it bends. Light bends around the corner. Is my that room illuminated right now? Not yet. But you can walk inside that room. कहां से लाइट जा रहा है? स्ट्रेट लाइन होने से तो ऐसा ही रहना है. उस रूम में घुस कैसे गया लाइट? कॉर्नर्स में बेंड होगा लाइट. लाइट कॉर्नर्स में बेंड होते हैं. शैडोज जैसे होते हैं ना, शैडो का कोई शार्प एज नहीं होता है. सपोज देयर इज अ शैडो व्हिच इज फॉर्म्ड, आप शैडो को मैग्नीफाई करते 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 जाइए, यू विल फाइंड दैट द शैडो डज नॉट हैव एनी शार्प एज. Outline, do you know what is outline? Like say suppose I draw, this is the outline of this person. Outline, इसका जो शैडो बनेगा ना, आपको शैडो भी ऐसे ही दिखाई देगा. बट इफ यू गो ऑन मैग्नीफाइंग दिस, यू विल लेटर ऑन फाइंड दैट देयर आर फ्रिंजेस, डार्क एंड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. लाइट बेंड्स अराउंड कॉर्नर्स, लाइट घुसेगा. लाइट इज सो लाइट को हम दो तरह से पढ़ते हैं. वन इज कॉल्ड द कॉर्पस्कुलर मॉडल, अगेन वेरी हाई लेवल. न्यूटन सेज लाइट दो मॉडल है. लाइट इज form of particle theory of light, आगे जाके then there will be a new model of light which is the wave theory of light. So light is something very stylish in typically physics. Light follows wave theory also. Light follows particle theory. Particle matlab light is supposed to be comprised of lot of small energy packets called photons. They are like particles. They come and hit your solar cells, transfer energy. Wave theory क्यों बोलते हैं? क्योंकि light bends around the corner like a wave. अदर थिंग्स जैसे साउंड है ना, साउंड को हम वेव करके पढ़ेंगे, साउंड को कभी भी पार्टिकल नहीं पढ़ेंगे. पर लाइट को इसलिए हायर क्लासेस में हम एक और चीज पढ़ते हैं, नॉट एट योर लेवल, वी कॉल इट एज डुअल नेचर ऑफ लाइट. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच वी कैनॉट एक्सप्लेन ओनली बाय पार्टिकल थ्योरी. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैनॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी. सो लाइट सपोर्ट्स बोथ. हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अभी 8 में इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ एनर्जी. It allows us to see things around us and it travels in a straight line. Are we ready? ठीक है? So the first thing that comes up in our subject is how do we see things? हम चीजों को कैसे देखते हैं? Right? So to see things, there are 3 things necessary. एक होता है source of light. ठीक है, एक होता है सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है जिस चीज को आप देखना चाहते हो, द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड आपके पास एक आई होना चाहिए. ये 3 चीज है तो आप देख पाओगे. दिस आर मिनिमम 3 थिंग्स रिक्वायर्ड. ये साइड को मिटा दो. ठीक है, दिस आर द 3 मिनिमम थिंग्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू सी थिंग्स. अब देखते हैं वो सी थिंग्स कैसे होता है. राइट, लेट्स से
Our object is a lovely flower, है ना? ऐसा एक सुंदर सा फूल है, बनाती है सुंदर सा फूल, ये ऐसा एक फूल है, ऐसा फूल है, इसको हमें देखना है, ठीक है, इसको हमें देखना है. नाउ say suppose our viewer is somewhere here. व्यूअर कहीं यहाँ पे है, इस आदमी को देखना है इस फूल को. So the criteria is very simple. I have to have a source of light. So let's me say there is a source. Source क्या हो सकता है? Sir, source can be a bulb also. Let's say there is a bulb which is a source of bulb illuminated here right now, right? Or it can be the sun, as you wish. There has to be a source of light. And before going to this further, let us also understand one more thing: the concept of light ray. Light ray. In geometry, do you know what is a ray? Yes, sir. What is a ray? Has a arrowhead which actually shows that it goes on infinite, and other side is terminated. Light ray is a imaginary thing. ऐसा कोई light ray होता नहीं है जैसा लक्ष्मण ने बाण मार दिया ऐसा ray. Light ray is imaginary, but we need to conceptualize the light ray in order to understand the topic. So a light ray is supposed to be, this is a light ray where the arrow shows the direction where it is traveling, and this is actually the source. यहाँ से आ रहा है and ये destination की तरफ जा रहा है, ये light ray है. Sir, do light rays exist in actual? No, there are no light rays in actual. Then why have you done all these things? In order to make it easy for us to understand. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, so and so is the son of so and so and his brother is this. We drew some diagrams, पर brother ऐसे थोड़ी होता है कोई arrow से. That is for understanding purpose. So light ray is an imaginary concept. It shows us what is the direction of flowing of light. तो ये अब थोड़ी देर के लिए इसको झाड़ू होता है ना, broom, आप इसको झाड़ू का एक तिनका समझ लो. A combination of tinka is called a jharu. So if you have more of these light rays together, then we call it a beam. So beam is a parallel light rays which are all directed towards the same direction. Which are all directed towards the same direction. That is known as beam. Are we fine? Okay. Now in order, अब कहाँ पे हम थे? How do we see things? चीजों को देखने के लिए you need three things. One is a source of light, one is an object, and one is an eye. So let's number them 1, 2, 3. Do we have them? Yes, this is our number 1. Then we needed the object. This is our object, beautiful little flower. And 3, and this is our eye. All three are there. Now the criteria is that light rays that fall from the source on the object must be reflected back towards our eye. If this criteria is met, this object will be visible to us. If this criteria is not met, no matter how nice the object is, we cannot see it. Does it make sense? For example, let me say right now I am standing like this. There is a whiteboard behind me, and I am a human being. I am not minion that I have got one eye which is on this side also. Okay. So can I see the whiteboard behind me? I cannot see the whiteboard behind me. Where is the source of light? Sir, there is the source of light. We have source of light. Are they falling on the whiteboard? Yes. Is it getting reflected back on my eye? No. Now what happens if I put a mirror in front of me? The light ray goes on the mirror and comes back to me. I can then see. वो mirror में ये board दिख जाएगा मुझे. Right? Now do you understand? अगर आपको vision चाहिए, तो आप जिसको देखना चाहते हो वो चीज चाहिए, जो देखेगा वो चाहिए, और एक source of light. Now make the room absolutely dark. No source of light. Can I see? No. और एक और होता है, इसकी आंखें निकाल दो. Gog out his eyes. Can I see? No. Is this clear? How do we see things? We see things with one condition met, that light rays originating from a source of light, when it strikes the object, should get reflected. Now question arises, do we see only one ray of light which is going out here? No. Then maybe multiple. Sir, is it not possible that there is a light ray in this house which has actually gone and hit this flower, and the flower has reflected it back on some other surface,
and this surface has also reflected it back. Yes, possible, मल्टीपल जगह से लाइट रेज आ सकती हैं. ये ट्यूबलाइट कितना बड़ा है, एक लाइट थोड़ी आ रहा है रेज से. ये हमारा ब्रेन लास्ट में करेक्शन करता है इसको. इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम सीइंग अनन्या 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 अनन्या, ऐसा नहीं है. हम एक ही अनन्या को देखेंगे. Light rays from all different sources are falling on her, and those rays are. But at the same time, light rays are falling on him also, on Chatur also. All the light rays are coming back to me, and I am able to see everything. But again comes his vision. How far can we see? Human beings do not see more than up to linear 180, and little bit more than linear we can see, but not both at the same time. Sometimes we see like this. कभी हम देखते हैं ना, ये गई यहाँ से. But there are some animals like ducks and all, वो पीछे तक देख पाते हैं, मुंडी नहीं घुमाया. हाँ, pigeons and all can see from any side. जैसे आप जाते हो ना pigeon को ऐसे ऐसे पकड़ने, वो लेकिन है उधर ऐसे एक टांग खड़ा होके देख लेता है आपको वैसे. ठीक है. How do we see? इधर उधर घूम सकते हैं. Crocodile can see from any direction. ठीक है. Is this clear? तो अच्छा समझ ही गया. अब आओ बात करेंगे अभी. इस आदमी को तो गायब कर दो भाई साहब, आदमी की और जरूरत ना है स्टोरी में. अच्छा, नाउ देयर आर सोर्सेज ऑफ लाइट के ऊपर बात करते हैं. सोर्सेज ऑफ लाइट, और यहां पे हमने सन को रखा और हमने मून को रखा. सर, ऑन ए मूनलिट नाइट द थीफ केम टू द विलेज on a full moon night. On a full moon night, the Taj Mahal looks very beautiful. That means there is a lot of light. But does the moon have light of its own? No. It reflects the light of the sun that falls on it. But it is giving you light. So sources of light, we see in these two, there can be two sources. One which has light of its own. Dracula has light of its own. Fireworm, glowworm has light of its own. So those things are known as luminous sources. Luminous means they emit their own light. और दूसरा क्या है? Non-luminous. Non-luminous are those sources of light which reflect, in other words, does not emit light of their own. इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस. समझ में आया? So categories of luminous objects. Can you tell me what is a luminous object? Sun is a luminous object. A fireworm is a luminous. A glowing torch. Don't say torch. रत्नदीप में बहुत टॉर्च रखा हुआ है, जल रहा है का? हाँ, तो नहीं जल रहा है तो कैसे ल्यूमिनस हुआ? ग्लोइंग टॉर्च. इसीलिए इनके बीच में एक और चीज आता है जिसको हम कहते हैं डीके एनजीके मींस धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. और वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. इफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग, देन व्हाट डू आई कॉल इट? ल्यूमिनस. इफ इट इज टर्न्ड ऑफ, तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, कांच है ना, नॉन ल्यूमिनस. ऐसा भी एग्जांपल होता है. जो आप जब इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल दोगे कभी भी, मेक श्योर यू यूज द वर्ड ग्लोइंग इफ यू आप इसको ल्यूमिनस में. अदरवाइज कैन यू गिव नॉन ल्यूमिनस इन द मून इज नॉन ल्यूमिनस, a turned off bulb is non luminous. But make sure don't write table. Table is not source of light. Table turned on हो turned off कभी भी लाइट नहीं देने वाला है. ऐसा चीज जो लाइट दे, जैसे ही से टॉर्च, a glowing torch, जो इच्छा, ड्रैकुला, ब्रह्मासुर, नरकासुर हा 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 करता है, वो भी ल्यूमिनस है. ठीक है. और कुछ चाहिए? अच्छा, अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये ऑब्जेक्ट्स को हम तीन तरह पे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. नंबर वन वी कॉल इज ट्रांसपेरेंट. Transparent are those objects which allow all light to pass through. All light मतलब एकदम complete measure. जैसे the eye lenses, हमारे eye lenses, we want it to be transparent, as clean as possible, so that all light pass through. Then comes what? Translucent. Translucent is something like butter paper, ठीक है ना, और frosted glass. फ्रॉस्टेड ग्लास जो बाथरूम में पेन में लगा रहता है. अब सोचो वकुल नहाने गया और डिजाइनर ने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया,
और ये देखिए वायरल हो गया है इनका नहाना। तो बकुल नहाने गया और ग्लास क्या था, ट्रांसपेरेंट था। तो यहां ट्रांसपेरेंट मत लगाइए, इधर ट्रांसलूसेंट ही लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट लगा दिया तो हो गया सत्यानाश। फिर हम जाके पूछेंगे हाउ मच डिड यू गेट, हाउ मेनी लाइक्स डिड यू गेट ऑन योर वीडियो, ठीक है ना। तो ये पूछ लेंगे, गड़बड़ी हो जाएगा। हाँ, और लास्ट वाला होता है ओपेक। ओपेक मतलब लाइट डज नॉट पास एट ऑल। आयरन हो गया, वुड हो गया, लाइट डज नॉट पास एट ऑल। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। So we started with light. We discussed about the nature of light. Light is something which has dual nature, both particle and wave, but that doesn't bother us so much. For us, light is a source of energy at grade 8 level. Light travels in a straight line. ठीक है? And then we spoke about sources of light, the condition in which something is visible to us. For something to be visible to us, we need that thing, a source of light, and the human eye. And the light ray should strike the object from the source of light, and there should be a reflection of that ray back to our eye. If this condition is met, we can see the object, otherwise we cannot see the object. Clear? Okay. Then comes, what are the sources? Sources of light can be of two types, luminous and non-luminous. Luminous are those sources which produce light on their own, and non-luminous are those which do not produce light on their own, they reflect. And there are some examples which under certain circumstances can be luminous, sometimes can be non-luminous. Objects are classified under three categories, transparent, translucent and opaque. समझ में आया? यहां तक था सुंदर सा राम कहानी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं। चलिए। Yes. Anyone has anything to ask? No. Very good. All good, children. Hey, Radisha ma'am, can I rub this? Okay, I'm leaving everything as you. When you say, sir, please rub, I'll rub them. Hey, Lakshan. Writing or only listening to grandmother's story? Good. Somehow your writing area has to be made. I'll speak to dad. Wait. Acha, it is there. I have a big space. Oh, you have a big space. Good. Hannah has placed her laptop nicely. It looks that the building is on earthquake mode, now going to fall on backside. That is like a hypotenuse. Her wall is like this. That means the wall is not like that. The laptop is like this. बेस्ट है हमारा हर्षित, बाएं हाथ से लिखता है, पीछे क्रिकेट बॉल, वो सुंदर सा क्रैश भी है एक, जब उसको अच्छा नहीं लगता है बेबी की तरह जाके क्रैश में बैठ जाता है, ठीक है, एक क्रैश जैसा है ना, एक मुझे क्रैश ही दिख रहा है वो। हर्षित, दैट्स अ क्रैश और समथिंग राइट बिहाइंड यू, लाइक दैट, लाइक इन मूवीज दे शो ना, गवाहों के बयानात, योर ऑनर, मैं कोर्ट में सच विटनेस बॉक्स जैसा रहता है मूवीज में, कोर्ट में, व्हाट इज दैट मेश थिंग? Baby cot. See how correct I am. Baby cot. So whenever Harshit gets bored up, he goes and lies there. Baby cot. देखा? एकदम correct. My judgment is not wrong. चले मिटाए, Ritisha ma'am, can I rub this? Oh, you said yes. I didn't hear it, you know. Hey, did you again watch Ritisha laughing or smiling somewhere? What is the latest report on her? I saw her down once. She was on the swing and she was on the swing and Ritisha also goes for इतनी खुशी है उसके लाइफ में, मुझे तो लगता है हमेशा दुखी होके बैठी रहती है। Wow, Ritisha, I never knew that. Hey, you came with your that बिलायती scooter or something that standard है? You come with that? Babies come with those. You're grown up. You're in grade 8 now. Somehow when I see that item ना, I get irritated. First of all, I feel that's like क्या काम नहीं है सर, अमेरिका के बच्चों को कॉपी कर रहे हो बैठ के। That's my scooter, that's my scooter. क्या स्कूटर? साइकिल चलाओ। देखें। Do you want me to ask something to you in front of your mother next time? So better keep quiet in class. Okay, next reflection. बेटा यहाँ से ध्यान देना शुरू करो, यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। Reflection of light. So we need to understand what is reflection of light, okay?
before understanding reflection, let's think about any surface. Right? This is a surface. So this is a surface. सर क्या सरफेस है, मेटल है, नॉन मेटल है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने जस्ट एक सरफेस बोला है, दिस इज अ सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस में कैसा रहता है, इस सरफेस में लाइट रे इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस, यहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक किया है, तो इसका एक इंग्लिश में अच्छा नाम होता है, वी से इट दैट दिस इज अ लाइट रे, light ray. Now you will use the word in English saying that light ray that is striking on this surface. No, we use good English. Light ray is incident on the surface. Incident मतलब light ray का आके गिरना. When a light ray strikes a surface or falls on a surface, it is called that the light ray is incident on this surface, and then this ray will be given a particular name, and we will call it as an incident ray. Incident ray कैसा ray है? देखो, the only difference of an incident ray, there may be many light rays which are coming from that source of light. And when light rays are coming from a source of light, these light rays are assumed to be all parallel. First of all, there is nothing called a light ray. We assume it to understand the geometry. So one of the it's like, have you seen those Ramayana episodes and all? So many arrows are shot. Few arrows are coming and striking this surface. All those arrows will be known as incident ray. Rather in plural, we will say incident rays. And the ray which did not strike it, I will call it a light ray. It is not incident. Have you understood? So after this, I will never use this language that light ray is incident on the surface. I'll use the word incident ray. So suppose a ray of light, and I name this ray of light as geometry as AB, is incident on a surface, and after that this surface has a capability to send the light ray back as BC. It strikes here and it sends it back. Then this ray is known as the reflected ray. क्या बोलेंगे इसे? Reflected ray. ठीक है? And B, the point where all these happen, I will call it as the point of incidence. The point of incidence. समझो अभी, I have a surface on which a light ray AB was incident on it, incident at a point B, and from point B, the light ray has been reflected back, and then the reflected ray is known as BC. Question arises, sir, I gave him 5 rupees, he sent back 5 rupees. Maybe. Sir, I gave him 5 rupees, 2 रुपया खा के 3 रुपया वापस दिया. Maybe. Sir, how much of light ray got reflected? Depends. Sir, can this be 100%? Yes. Can this be 60%? Yes. Can this be 0? Yes. If 100% is getting reflected back, then I call this surface as a perfectly reflecting surface. Means this surface is such that light ray, you come and strike me, you go out from here. However, if 80%, 90%, 90, 60, 70 are reflected back, then I'll call that the light, this surface is also absorbing something. Right? Now let's say you are wearing some cardigan or a sweater or a jacket, you're walking in sunlight on a cold day. When the sunlight, I don't know how many of people have gone to cold places. When you go to cold places and you're walking in the sunshade, you actually don't feel comfortable. Then whenever you walk in the sunlight, you feel comfortable. That means, and are you being visible to others? Yes. So light rays that are falling on me are partially absorbed by my garments also. That's why I'm feeling warm. And some I'm reflecting back. So question arises, sir, is there something that is a perfect reflector? No. सब लोग थोड़ा ना थोड़ा तो खाएगा ही, but theoretically we can assume that there is something which is a perfect reflector also. We can assume, sir, is there a perfect girl? Theoretically possible. A girl who speaks no lies, this. Sir, इतने property तो मैच ही नहीं करेगा. तो perfect reflector कुछ होता नहीं है. Plus close to perfection reflectors, yes, we can make. हमारे गाड़ी के headlights में reflectors रहते हैं. They're very costly. We make it with special material so that we get एकदम close to good reflection and no absorption. वरना दुनिया में कोई भी चीज पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता है. अब आप किसी को बोलो
एक मटका हनी यहां से वहां ले जाओ, वो जब ऐसे लेके जाएगा ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो लेके ही जाएगा। तो लिटिल बिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एनीथिंग विल ऑलवेज बी देयर। ओके, सो उतना हम अभी डीप में नहीं जाएंगे। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ माय क्वेश्चन फर्स्ट अराइजेस, हैज द सरफेस रिफ्लेक्टेड अ रे? यस। हाउ मच? लीस्ट बॉदर्ड। रिफ्लेक्ट किया कि नहीं? हां किया, हां किया। तब ऐसे सरफेस के ऊपर डालेंगे एक एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? दैट बेटर डिफाइंस अ नाउन। विशेषण, संज्ञा की विशेषता को बताने वाला। कैसा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? इन देसी वे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल अबाउट? अब ये पूरा चीज को स्टिच करना पड़ेगा इन अ लैंग्वेज इंग्लिश वेयर आई एम नॉट गुड एट ऑल। You all are good in English. I am तो very desi. So what is reflection? The phenomenon, पहले सुनो फिर लिखो। The phenomenon due by which a light ray which is incident on a surface is sent back to the medium from where it had come is known as reflection. और हम ऐसे भी कह सकते हैं, when a light ray is incident on a surface and the ray is sent back, then such a phenomenon is known as reflection of light. और बेटर डेफिनेशन चाहिए? टेक्स्ट बुक इज देयर, बोल्ड में, लक्ष्मी सिंह में सुंदर से रहेगा। यू स्टार्ट थिंकिंग, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिनन, एक पद्धति है। क्या होता है उसमें? कोई इंसिडेंट रे अगर किसी सरफेस को स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करके वापस चला जाए तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनी क्वेश्चन? Right. So if a light ray is incident on a surface and after incidence it is sent back or the surface reflects it back, then it is known as reflection of light. And a ray which comes and hits the surface is known as the incident ray. The point where it hits is known as the point of incidence, and the ray that goes back is known as the reflected ray. So आपने यहाँ पे बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें सीख लिया है। टर्मिनोलॉजी 1, टर्मिनोलॉजी 2, टर्मिनोलॉजी 3, and then you call this as a reflecting surface. ये चार टर्मिनोलॉजी अकबर पढ़ के देखिए तो have you understood? Incident ray is that ray which comes and hits the surface. Reflected ray is that ray which is sent back by the surface. Point of incidence is the point at which the incident ray is incident upon, or is also the point from where the reflected ray originates. Reflecting surface is after all that surface which has done all this karnama. Now this reflecting surface can be excellent, fair, average, poor, ठीक है ना? एक्सेलेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये क्वेश्चन आता है। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सारे सैटेलाइट्स के जो सोलर सेल्स में बहुत ज्यादा सिल्वर का यूज होता है। इसलिए when satellites lose their life and they come and fall on some ocean or something, जिसको मिला बहुत चांदी मिलेगा उसको। सिल्वर का बहुत यूज होता है, ठीक है। सिल्वर इज अ एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर, द बेस्ट रिफ्लेक्टर, इससे बढ़िया और कोई रिफ्लेक्टर होता नहीं है। तो आता है, हम तो सिल्वर लाते नहीं है, तो हम अपना चेहरा किसमें देखते हैं रोज? मैं कितनी सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। तो इसको हम कहते हैं मिरर, और ऑप्टिक्स में इस मिरर के ऊपर ही ज्यादा स्टडी होता है। एवरेज और पुअर हम नहीं देखेंगे, देखा? पुअर मतलब कैसा? गोबर का पानी, उसमें देखने से अपने आप को इंसान जैसा दिखेगा, पर मैं जयदीप दासी हूं कि नहीं वो नहीं पता चलेगा। चश्मा तो नहीं दिखेगा, मतलब पुअर है। तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आइए, सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम हियर? The best reflecting surface is from silver, and then the fair and everything comes as mirror. So इस मिरर में भी बहुत तरह के मिरर होते हैं। पहले जो मिरर हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। नॉट प्लेन, प्लेन मिरर। प्लेन मतलब है प्लेन डोसा। दिस इज नॉट अ प्लेन, दिस इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मीन्स अ मिरर इन अ प्लेन, समझते हैं? अच्छा सुनिए, right now in front of me is a 3D space. This is hawa. In this hawa I can have many plane. X plane, Y plane,
सेट प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, कहीं भी आप एक A4 पेज को ले लो और कैसे भी रखो, वो सब एक प्लेन है. हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी? इनफाइनाइट. As many orientations that I can think, these are all planes. वैसा एक प्लेन में एक मिरर को रख दो, वो मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर. नॉट प्लेन, हाँ, PLAIN मत लिखना. प्लेन मिरर मीन्स इट्स अ मिरर इन अ प्लेन. What is a plane? The easiest way to understand is your tabletop is a plane, horizontal plane. टेबलटॉप को सीधा कर दो, सर वर्टिकल प्लेन है ना. सर ऐसा टिल्ट कर दिया तो XY प्लेन, ऐसा. सो देयर कैन बी मेनी वेज. जस्ट थिंक हाउ मेनी वेज यू कैन ओरिएंट द बुक. और ऐसे अगर कोई मिरर है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर. Sir, what are the other forms of mirror? If you say that there's plane mirror, there's another mirror called spherical mirror. Have you gone to the basement and parkings and all? Have you gone to shops? And I hope you all don't have habits of shoplifting and all. So in shops where there are no CCTV cameras, you have got those spherical mirrors kept. Those are security mirrors. Yeah. If you go to car parking basements and all, you'll see those spherical mirrors kept. Those we don't study in grade 8. We'll study in grade 9. इन्हें हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं. Why? They are a part of a sphere. Sphere क्या होता है? Something like a football. So imagine a football of a mirror. वहां से एक पोर्शन काट के हमने बनाया, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं. हमारे ग्रेड 8 में इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. We're going to study only about plane mirror, right? अब बात आती है, सर how do you make this plane mirror? How is this plane mirror made? Very easy. In our days we used to make it as school project. अब सीख लो plane mirror के लिए क्या चाहिए. प्लेन मिरर के लिए सबसे पहले व्हाट यू नीड इज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास. प्लेन शीट ऑफ ग्लास. सर दिस विंडो ग्लास, वेल दिस विंडो ग्लास इज दिस इज नॉट ग्लास, दिस इज एक्रिलिक. It is the same material which is there in your geometry scales. But if you come to A tower and B tower in PBL city, they are all glass. Glass windows will be very heavy. These are all acrylics. But ये काम करेगा उतना अच्छा नहीं करेगा. So you take a plain sheet of glass. ठीक है, एक plain sheet of glass लिया and I will now, this is my plain sheet of glass. The further drawing will be made where the glass is kept like this. Are you understanding? Next drawing, I won't draw it like this. This is just to make you understand this is a plain sheet of glass. अब मैं इसको ऐसे रखूंगा. ठीक है, तो देखते हैं प्लेन मिरर बनता कैसे है. आइए सबसे पहले, so first I will have a sheet of glass and the sheet of glass will have some thickness. अरे देखो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. So this is my glass sheet. Have you understood what drawing I have made? This is the thickness of the plane mirror. I have made something like this. Hannah, Lakshan and Harshit, have you understood? This is the plane glass. It is kept like this. How did you show it here, sir? I showed it like this. Now I have kept it like this. ठीक है, ये ग्लास हो गया. So इस ग्लास के पीछे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले we will put something which is known as a reflecting surface or a reflecting coat. A plain sheet of glass is taken, and after the plain sheet of glass is taken, a very thin and very fine, good quality reflecting materials coat has been given. Sir, I don't have that much money to make my project. How can I make this thing? Okay, you can make it. Does your mother use foil for packing sandwiches and all? Use that foil. Make sure you don't crumble it. You can use that also. Foil. ठीक है. People, there's not concave here. Concave concept is not there. Yeah, it will get damaged. So here the concept what we will use is, have you seen, gone to some people, any relatives or any house in hotel or something, where the mirror quality has now become bad? Mirror. Suppose we have not put a very good quality mirror, थोड़ा cheap mirror लगाया. आप देखना उस mirror के पीछे से peel की तरह shiny surfaces come out as skin. Have you eaten kaju katli? On the kaju katli we give, there is a foil paper लगाया हुआ रहता है. That foil paper can be removed like a skin. So some of the mirrors you will find which have gone old, they actually have peeling off. तो वो peel जो हो रहा है ना, that is basically that reflecting layer is getting peeled off. So how does a mirror become costly? You will find some mirrors which are very costly. Modi glass आपको बोलेगा, Modi is a very costly brand. तो जब भी आपको बोलेगा ये कैसे हो रहा है, Saint Gobain, very costly. Those mirrors will be like costing 5 times. IKEA में जो mirrors होते हैं ना, they are good because that reflecting surface quality is very good. Very thin, extremely good quality reflection. If you can afford, और आपने silver का lining लगा दिया, पतला, very पतला,
इतना मोटा सिल्वर नहीं लगाना है, वेरी वेरी पतला, you will make a very good mirror. Now have you understood? So what do we have on this side? This side I have got glass, this is glass, and this is my reflective layer coating. समझ में आया? अब ये कोटिंग को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या, ये फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर आप मिरर बाजार में खरीदने जाओगे तो देखना मिरर के पीछे साइड रेड कलर रहता है हमेशा, देयर विल बी अ डल रेड कलर। दिस इज नथिंग बट अ पेंट विच इज कॉल्ड रेड ऑक्साइड, एंड रेड ऑक्साइड इज एक्सट्रीमली कोरोशन प्रूफ। इसको हम क्या बोलेंगे? रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है? तो अ प्लेन मिरर कंसिस्ट ऑफ 3 parts: a glass sheet of nominal thickness, you don't bring this big glass sheet, very patla. After that you have got a reflecting surface which is very 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 in microns, इतने ये सेंटीमीटर में भी नहीं होगा, माइक्रॉन्स में होगा। And then there is a final coat of red oxide paint to give protection to this. As we keep on using our mirror, the red oxide will first wear off. Once it wears off, it exposes this layer और ये चला जाता है। फिर आपको आपका मिरर ना आर पार नहीं, मिरर और रहा नहीं ना, गिलास बन चुका है वो। ठीक है? Once this is made, you can ask our friend Chaturlingam Bakul to come over here and say ta na 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 na। बस ये देखो मिरर बन गया है इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, ये सब वन वे मिरर ही है। नहीं, वो सी थ्रू मिरर्स जो होते हैं, सी थ्रू मिरर्स में ग्लास पार्ट रहता है। सी थ्रू मिरर चेक करने का एक ही तरीका है, अपना उंगली लेके मिरर में लगाओ, इफ द अदर फिंगर डजंट टच यू एंड देयर इज अ गैप, दैट मींस दैट मिरर इज अ सी थ्रू मिरर। ये सब पजल वजल में रहता है। ठीक है? आइए, अब इसको हर बार हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू यूज प्लेन मिरर अ लॉट इन आवर ड्राइंग, सो वी शुड हैव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। लाइक this is schematic representation of Vakul. Does Vakul look like this? No sir, in actual he is much more cunning than he is looking out here, so he doesn't look like this. So this is schematic Vakul. So let us make our plane mirror. So our plane mirror is, in all our drawings will be made like this beta. A vertical line, will make a vertical line and we will just etch one side, which is this called etch, etching, etching बोलते हैं इसको हम etch कर देते हैं। etch करने के बाद इस साइड को हम बोलते हैं रफ साइड, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ साइड। स्मूथ साइड, एक और वर्ड होता है पॉलिश साइड, पॉलिश साइड, और सबसे इजी वर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। समझ में आ रहा है बच्चा? तो अगर हमारा ये सरफेस, नाउ इट नीड नॉट बी ऑलवेज प्लेन मिरर, छत के ऊपर का टिन भी तो रिफ्लेक्ट करता है, आंखों में आ जाता है ना ऐसा शाइन करके। इवन ग्लास ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स। आफ्टर लंच डोंट यू डू इन क्लास, घड़ी लेके ट्यून खेलते रहते हो ना, सो ग्लास इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग, नॉट दैट गुड as a plane mirror would do. So in this diagram, if I now replace this surface with a plane mirror, it will be something like this. So the light ray is striking which side beta? The smooth side or the polished side or the reflecting side. आज आपने बहुत कुछ सीखा। पहले लाइट सीखा, light is a form of energy, light helps us see things, light travels in a straight line, that is called the rectangular propagation, rectilinear propagation of light. Then we also learned light has dual nature, thoda higher advanced, light has got wave nature as well as particle nature, that we'll learn in higher classes. Then we said how do you see things? Then to see things, when you came with source of light, you learned about luminous source and non-luminous source. Before going there, you also learned about what is the concept of ray of light, what is the concept of a beam of light. Then we also learned about, क्या पढ़ा हमने पढ़ा transparent, translucent, opaque. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? What is reflection of light as a phenomenon? वो phenomenon due to which a light ray which is incident on a surface known as the incident ray is sent back to the same medium जहां से आप आए थे,
or is sent back to the by the reflecting surface is known as reflection of light. Such a surface is known as reflecting. Such surfaces can be excellent. In that case, the reflecting surface is silver. And then there are average. So all our consideration, we will not use silver. We will be taking the example of plane mirror. Now, what is a plane mirror? A plane mirror is a mirror which is in any plane. It can be in any orientation. Has three parts. One is the glass sheet, followed by the reflective clear coating, which is very, very thin. This is very thin, very, very thin. And the entire cost of the glass mirror is due to this. ये जो अच्छा लगाएगा, glass का दाम उतना, glass का cost नहीं होता, glass is very cheap. And then comes the red oxide protective layer. This schematically will be always shown like this as a rough side. Are we fine? Next comes laws of reflection. पर अभी उतना पढ़ा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज फिर आप absorb नहीं कर पाओगे. Any question you have to ask here, you can ask. Any question anyone has? कल टेस्ट भी है ना? कल क्या है? साइंस, सोशल. कल सोशल है. गुड. एनीवन कुछ पूछना है? या टेल मी. Does the amount of thickness of the reflective sheet make the reflective Surface better or something like that? No, it's not like that. It's the quality of the material. so it can be After a certain thickness, I don't need it. You are just adding up. It's like, sir, does the length of the pen? After, I don't need it. Got it? The reflective surface should be of good quality. How thick you make it has nothing to do. I don't need it thick. I want its reflection property to be good. It should not eat light. It should, जो भी आया कुछ मत लो, मंदिर का पुजारी बनो, सारा दक्षिणा प्रभु के लिए है, मेरे जेब में कुछ नहीं. Excellent reflector पंडित जी. Another पंडित जी, सारी दुनिया का माल लेके भागा. Excellent absorber पंडित जी. Don't become the absorber pandit ji. Be the reflector. She has already packed her bags. The moment I say you can go, she will go. You will be the last one to disperse today. You will keep seated and you all will go together. I'm very crook, you know. Yeah. Shall we close then? So we meet on our next class. Lakshya, I'll send you the book also. And our next class, we will be going with maths. So maths, what are we doing? We have to open our next front also. Like quadrilaterals मैंने करने को दिया था, हुआ है कि नहीं टेस्ट वेस्ट? नहीं हुआ. चलो थोड़े क्लास में करेंगे क्वाड्रिलेटरल. और चलो क्वाड्रिलेटरल होमवर्क ही रहता है, आप करते रहो. हम लोग थोड़े से क्यूब रूट्स की देखने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा. ठीक है.